हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। मैं शीना टीम जोरबा की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। हमारी ये जो सीरीज चल रही है माय एक्सपीरियंसेस विद पत्री जी, जहां पर हम एक ऐसी जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम बहुत सारे ऐसे अलग अलग मास्टर्स से मिल रहे हैं और उन मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस जान रहे हैं पत्री सर के साथ में कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को शुरू किया था और इस जर्नी के दौरान वो पत्री सर से कैसे मिले, पत्री सर के साथ उनके कैसे अनुभव रहे, क्या जर्नी रही पत्री सर के साथ, एंड उस जर्नी में उन्होंने क्या क्या सीखा पत्री सर से और उन टीचिंग्स को किस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाए। सो दिस शो इज ऑल अबाउट पत्री सर एंड टीचिंग एंड एक जर्नी मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर डॉक्टर ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के बीच की। तो आज हमारे साथ जो हमारी होस्ट हैं वो है फुलटूशी चक्रवर्ती रोज मैम, जिनके बारे में अगर हम कुछ बोले तो बहुत कम होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है जिसमें से एक मैं भी हूँ। पत्री सर के साथ बहुत ही क्लोजली रहकर उनकी टीचिंग्स को उन्होंने सीखा है और उसको उन्होंने जो है इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में, और हर किसी को वो आगे बढ़ा रही है कि इन्हीं टीचिंग्स को वो सीखे और उनको इम्प्लीमेंट करे और अपनी लाइफ को चेंज करे। इसी के साथ आई वुड लाइक टू इनवाइट रोज मैम कि वो स्क्रीन पर आए एंड हम शो की शुरुआत करेंगे। बट इससे पहले हमारे जो आज के गेस्ट है, इज अ वेरी स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर जी के, डॉक्टर गोपाल कृष्णन, जो कि विशाखापट्टनम से हैं। सर फाउंडर एंड चेयरमैन है स्पिरिचुअल टैबलेट के। इसके साथ ही जो है सर, जब पत्री सर अपने इनिशियल डेज में उन्होंने जब मेडिटेशन को जाना था और जब वो मेडिटेशन स्प्रेड करना शुरू किए थे, तब डॉक्टर जी के जो है उनके इनिशियल स्टूडेंट्स में से एक हैं। तो आई कैन इमेजिन कि जब, क्योंकि पत्री सर इतने पैशनेट थे उस वक्त, पत्री सर अपनी लाइफ में थ्रू आउट लाइफ में बहुत पैशनेट थे फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो डायरेक्ट उनसे जब उन्होंने सीखा होगा तो उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस लिए होंगे थ्रू आउट उनकी अपनी जर्नी में। उन्होंने बहुत कुछ क्लोजली पत्री सर से सीखा होगा। जैसे कि उस दिन हमने डॉक्टर न्यूटन के एक्सपीरियंसेस को जाना था। सिमिलरली आज भी कुछ पावर पैक जो है हम एक्सपीरियंसेस जानेंगे डॉक्टर जीके से, उनकी जर्नी, इनिशियल जर्नी पत्री सर के साथ में, क्योंकि पत्री सर के साथ आई बिलीव उन्होंने बहुत कुछ क्लोजली सीखा होगा, जाना होगा एंड एक्सपीरियंसेस गेन की होंगी। तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम आई वुड रिक्वेस्ट रोज मैम की वो सेशन को आगे लेकर जाए, सीरीज को आगे लेकर जाए, और ये जो रोचक जर्नी है डॉक्टर जीके की पत्री सर के साथ में, उस जर्नी को हम जान पाए। थैंक यू सो मच। Okay, thank you, Sheena. Thank you, Team Zurba. Yes, I welcome Dr. GK, GK sir, on behalf of all the team and all the viewers. So this is very amazing that I wanted to chase GK sir. That's why it's very difficult for us in the morning, because all night the Team Zorba is night meditators, right? But anyways, this is going to be a live, so we will be having the recordings. So the number is few, but I always believe GK sir says those who are ready and those who are needed, they will be only with me. So I am sure he is happy to see those people. बट एनीवेज मैं बताना चाहूंगी कि जीके सर से मेरी मुलाकात लगभग 2012 में विशाखापट्टनम ध्यान महाचक्रम में हुई थी, और ही सच ए ग्रेट मास्टर, जो पत्री सर की झलक या बोल सकते हैं ग्लिम्सेस उनमें मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। और सारी टीचिंग्स, अगर पत्री सर नहीं होते तो मैं जीके सर को पूरे समय सर ये बताइए सर क्या करना है, एंड आज मैं अगर इंडिपेंडेंट एक मास्टर बन पाई हूँ तो देयर इज अ रोल ऑफ डॉक्टर जीके ऑल्सो। तो एंड आई वाज ऑलवेज चेजिंग सर, आई वेंट टू विशाखापट्टनम टू बी विद जीके सर जब मेरी बच्ची 6 महीने की थी, कि सर आई वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न। तो आई वाज सो पैशनेट, बट he is conjuice, I can say, in giving teams or little knowledge, but we have to chase him because he is gyan bhandar,
and of course initial days से और उनकी जो journey, how he used to write his book, how he used to compile his spiritual tablet wisdom. तो सर हम कोशिश करेंगे कि प्लीज आज थोड़ा और चीजें आप जरूर बताएं. So right from meeting Patri Ji, because you are a doctor, MBBS doctor, and you are you have practice for the society, then coming to this spirituality, because अभी भी बहुत सारे ऐसे doctors हैं, they know कि this chemicals are not needed, but they don't have that much daring because they have to follow the norms and so many things are there. But you are such a great doctor that कि आपने पत्री जी से inspire हुए, because recently Maheshwari ji भी आई थी and she was telling about you कि they all used to feel कि he is gone mad, why he is saying like that, he went to study, then why he is not prescribing medicines and like that. To face such a great challenge, then also you were so much dedicated, you know, I have to practice what I realize the truth. तो हमें सर वो जर्नी वहां से शुरू करेंगे सर, कि आपको क्यों लगा कि yes, Patri ji, what he is saying, yeah, after what was your first meet when you understood कि what he is saying is definitely ये पूरा सत्य है और यही हमको अप्लाई करना है. Yes sir. Yeah. Namaste and good morning everyone. सबसे पहले ब्रह्मर्षि पितामह को कोटि कोटि नमन, और सारे पूरा सीनियर पिरामिड मास्टर्स और जूनियर पिरामिड मास्टर्स सबसे ये लाइफ टाइम में बहुत सारा सीख लिया, और इससे मेरा खुद का और फैमिली का स्पेशली वैद्य शास्त्र को 6 साल पढ़ने के बाद जो इतना लोग मेरे पास आ रही है आरोग्य के लिए, वो सबको एक नया रास्ता में आनंद देने के लिए इतना ज्ञान दिया था. पत्री जी को मैं शुरुआत में MBBS 4th ईयर पढ़ने के समय में 1994 अप्रैल में मिला था. Initially, I met Paul Vijay Kumar, my initial mentor, और इसके बाद पत्री जी को मई मंथ में बुद्ध पूर्णिमा का दिन में सर को मिला है. वो समय में करीबन 1.5 साल लोग थे, only 150 in number, and वो 3 दिन सर को ऑब्जर्व करने से वो पिरामिड में, कर्नल पिरामिड में वो एक गुरु तरह टीचिंग भी करता है, एक फ्रेंड तरह सबको भी उनका गले में ले जाता है, और खाना सबको भी वो खुद रेडी करके सबको भी देता है. कोई ना कोई छोटा सा गलत कर लिया तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है. एंड he is writing all the time, correcting lot of papers in literature, and bossry भी बजाता है. So within 3 days, I am able to see so many dimensions in him, and जो स्टैंडर्ड गुरु बोलने से वो दूर रहेगा, उनको पाद नमस्कार करना पड़ेगा, और वो मिलजुल करके जाते हुए कोई गुरु को मैं देखा नहीं. मैं गुरु को दूर से ही देखा है. वॉट एवर द सिनेमैटिक इम्प्रेशन जो रहता है, इससे एकदम डिफरेंट है. तो बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर एंड बाकी जो डॉक्टर्स मेरे साथ थे, सबको भी वही इम्प्रेशन है. वो ही समथिंग डिफरेंट. ही कॉल्स हिमसेल्फ एज ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट rather than guru. So that is the first jolt I have with him. And इससे ज्यादा जो लोग उधर थे,
वो सब लोग बोल रहे कि हमको दवाई का जरूरत नहीं है, डॉक्टर का जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट का जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ध्यान मार्ग में आगे बढ़कर आनंद जीवन में हम लोग जा सकते हैं। पत्री जी ने हम सबको बोला है कि there is no need of medicines, meditation is medication. Not only for the ordinary illness, even for the serious illness also. At that time, we met Murthy sir and Aruna madam, a brilliant couple. मैडम ने हमको 2 किताबें दिए थे, Wisdom from the 40 Masters book, and the book title itself is Nenu, I. So उनका बेटे ने appendicitis प्रॉब्लम से वो सफर हो रही है। यूजुअली दैट appendicitis मतलब तुरंत डॉक्टर के पास जाके सर्जरी के लिए सब लोग सोचते हैं। But she sat in meditation hours together and completely she cured herself. वो सर्जरी के लिए गया भी नहीं। So that is really एक जगह में देखने से हम लोग सोच रहे हैं कि अरे यार ये सीरियस है, तो सीरियस हो जाएगा, but no. And apart from that, so many chronic illnesses, वो ध्यान करने के बाद हमको ऐसा ठीक हुआ, ऐसा ठीक हुआ. So this really caught my eye because by the time I'm searching a lot how best I can treat patients, because हमको मालूम हुआ कि MBBS become whatever the science we are studying, it's a limited one in its own way. And then इसमें बोल रही कि बहुत सारा बीमारी जो जीवन भर दवाई लेने के है वो सब ठीक हो रही है. So that really caught my eye, and I have decided after talking to Patriji Kumar and understanding Patri Ji wisdom and in live observed so many masters, and I have interacted with Dr. Newton also. Those are our immediate seniors and the first line disciples of Brahmarshi Patriji. And that interaction with Dr. Yugandhar, Dr. Newton, and Paul Vijay Kumar, Anjali Sharma sir, Swarnavala Patri madam, Ranga, VT, ये सब मास्टर्स को मिलने से और पत्री सर का टीचिंग्स भी वो 3 दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन में सामूहिक ध्यान के साथ, एंड इसके अलावा pyramid, first time I meditated inside the pyramid, and that gave very good experiences to me. So that is the reason majorly, one is his dynamic mind, the way he teaches the people and multitasking, and apart from that he is giving a very good solution for most of the chronic illnesses. So initially I decided myself to go with him so that I can learn that wisdom and I can apply the same in my practice to give health and happiness to all the people who are going to come to get treated. Yeah. Sir, you were talking about Patri madam. So that days you people used to visit sir's house and do lots of experiments. So can you share about those experiments? Like means you were मतलब आप वहीं रहते थे sir, कर्नूल में? No. I was in Vijayawada in Siddhartha Medical College, but very frequently we used to go to Kurnool, और वो कर्नूल पिरामिड में कम से कम हर एक 40 दिन से लेकर 2 महीने में एक बार उधर जाना है, 2 दिन 3 दिन, कभी-कभी 1 हफ्ता, और कोई भी हॉलिडेज आया तो वो कर्नूल पिरामिड में जाके उधर ही रहना.
ऐसा करते थे। या ओके, तो सर आप कौन सा बुक से शुरू किए? मींस हाउ यू फेल्ट कि ओके along with the meditation book reading is also needed, and then when you have seen that there is a means sir is getting changed or like that, you started feeling, because आप लोग हमेशा मिलते थे बट धीरे धीरे सर का जो इवोल्यूशन आप कब विटनेस कर पाए while reading your books and other practices जो वो बताते थे? या सो पत्री जी ने करीबन 50,000 किताब तक पढ़ चुके हैं वो। इससे द बेस्ट बुक्स in my life are given by Patri Ji only. Initially, I read the book Jonathan Livingston Seagull, and after that, You Forever. And there is a book with the experiences of so many masters, that is Buddha Pyramid Dhyan Kendra, वो तेलुगु में है। वो किताब भी मैं पढ़ लिया, और अरुणा मैडम का दोनों किताब। And slowly I entered into Tulsi Dal. So Tulsi Dal is a masterpiece given by Patri sir. It has got everything from east to west, all about all the spiritual masters, and 7 body structure, all basic spiritual wisdom like astral travel, telepathy, aura. सबके लिए पत्री जी ने वो क्रिस्प में, मतलब a single page में, it's a very brief and crisp and then very perfect and scientific. So that book really gave me, after the E Forever, तो तुलसी दल में मेरे को पूरा स्पिरिचुअलिटी के बारे में a rainbow wisdom, I can say it's a rainbow wisdom, and that gave me really a very good idea how much कितना है सीखने के लिए. Every master is a flavor, and they give their own way of presentation about the truth. और इसके साथ साथ पत्री जी शुरुआत में a simple way में 3 do's and 3 don'ts, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत, ये तीनों करने के, and 3 don'ts, no mouse much, शाकाहारी बनने का सबको भी, और no need of medicines. ये अजम करना बहुत मुश्किल होता था मेरे को. Being a medical doctor, I am supposed to write medicines, but he says no medicines. अंदर जो इतना ऊर्जा है, हमको खुद वो ध्यान मार्ग में ध्यान करके ऊर्जा को हम ले आ सकते हैं, और मेडिटेशन करने से मेडिकेशन की जरूरत नहीं है. That is his second don't. And third thing is, ध्यान करने से हम खुद भगवान बन सकते हैं. अंदर जो भगवान है उनसे हमको बातचीत होगा. वो ज्ञान सीखने के बाद हम खुद भगवान बन सकते हैं, इसीलिए वो पूजा पाठों का जरूरत नहीं. So this initial teaching is this 3 do's and 3 don'ts, and he is so particular. Wherever he goes, the first teaching will be about vegetarianism, which is very hard to digest. People are so used to it, especially in North India में बहुत सारा शाकाहारी होंगे, but लेकिन in South India you will find 90%, 95% people are non-vegetarians. But he is so rude and straight to point. If anybody is eating non-veg means एकदम उनको क्रोध मार्ग में भी उनको शाकाहारी बनने के लिए वो कोशिश करता था. That really make the people a true spiritual seekers. People may read books, may tell much about spirituality, and if they are eating non-vegetarian, their implementation में zero बोल सकता है. Because spirituality starts with compassion, kindness, and love. Without those things, I don't know how
they speak about big words in spirituality. So that is what, in simple way, he says like that. And that really used to give us how best we can reach the true spirituality by simply applying, the vegetarianism. So initially, meeting Patri sir and learning from him, शुरुआत में तो बहुत दूर से, क्योंकि उनको नजदीक जाने से वो क्या बोलेगा, कैसे ट्रीट करेगा, सबको भी पता है. But we are a bit clever, I can say. All the doctors know. We thought उनके पास पॉल विजय कुमार है, डॉक्टर न्यूटन भी है, और योगेंद्र सर है, मैडम स्वर्णमाला पत्री मैडम. ऑल दीज मास्टर्स आर देयर. जी फ्रंटलाइन मास्टर्स जो है उनके पास पहले हम काम करेंगे. ये लोग से सीखने के बाद फिर तभी पत्र सर के पास जा सकता है. Frankly speaking, to learn from these masters, it took around 1.5 years. 1.5 साल हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये लोग के पास, ये मास्टर्स के साथ काम किया था. और इसके बाद पत्री जी को नजदीक में एक दिन और उनके साथ घूम फिर करके बहुत सारा गांव में ध्यान बोलने के समय में सर ने हमको माइक देता था अनुभव बोलने के लिए. So after learning from the primary disciples, and then we went to Patri sir. Yeah. So any experience where you saw him something different from the physical body, then you finally realized, yes, whatever you have decided, that is in the right path. मतलब आप जो अब जन कल्याण के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि आपने फिर कंप्लीट किया, फिर सर्विस में शुरू किया, तो आप उसको वैलिडेट कैसे किए सर? Yeah, it is not only one experience. There are multiple experiences. Practically speaking, the first thing I fascinated to follow him is, usually हम कोई ना कोई बीमारी वाला कोई आदमी को पूछने से वो बताएगा कि मैं ये डॉक्टर के पास गया, उनके पास जाने के बाद मेरे को आरोग्य मिला. बट वो समय में इतना सारा पेशेंट्स को जो मिला था, वो लोग बोलेंगे कि मैं पत्री जी के पास गया था, उनके पास जाने के बाद मेरे को हेल्थ पूरा ठीक हो गया. So who is this Patri Ji? All these people are referring to him. I did meditation, I met him, उनको मिलने के बाद ही ठीक हुआ. So this is the first and foremost point I refer why I accepted Patri Ji in my life. And then second thing is simple way of teachings. The concepts he used to tell every time we meet him are really fabulous. They look very simple and thought-provoking and easy to implement. One example is like always he used to teach this concept in the initial days, like Lakshmi, Parvati and Saraswati. 3 goddesses. Initially, we need to go to Parvati. Parvati Ma means Urja and meditation, detachment and Atma Vijnan. We need to accept Parvati Ma और उनको पूजा करना मतलब खाली पार्वती माँ को फोटो नहीं रखने का है, पूजा नहीं करने का है. उनके अंदर जो क्वालिटीज है, ऊर्जा है, वो लेने के लिए हम लोग ध्यान में बैठने का है. आवर्स टुगेदर. देन इसी प्रकार हम वो पार्वती माँ को, वो गॉडेस को हम आवाहन कर सकता है. एक बार आपको पार्वती मिल गया ना, ऊर्जा मालूम पड़ा, आप आनंद आरोग्य है, then you have to shift to Saraswati Ma. So Saraswati means arts. You have to practice
कोई ना कोई कला सीखने का है। इसके लिए इतना घंटा बैठना मतलब उतना घंटा बैठना ही है। म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, whatever the art you wish to learn, maybe it is in your life purpose also. Sometimes we get through meditation, so you have to practice it. वो बोलेगा कि ये बांसुरी देखिए, वो सबको भी देता था, ये बांसुरी से तुम ट्राई करो, आवाज दो बोल के। Nobody, they can't even play it. And he will play a beautiful raga out of it. And he says, I learned this flute from the age of 11 years. And I learned music also. So learning art is Saraswati. और ये बोलता है कि जो आदमी के पास पार्वती है और सरस्वती है, उनके पास संपदा, समृद्धि मतलब लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगा। Without practicing और without reaching पार्वती माँ और सरस्वती माँ, जो लक्ष्मी आपके पास है, इससे कोई मतलब नहीं, वो बेकार है। हम सब लोग देख चुके हैं कि कोविड के समय में लोगों के पास करोड़ों रुपए है, लेकिन लोग कैसे जिया था। There is no use of money. So that's why if you are perfect with Parvati and then Saraswati, whatever the Lakshmi, maybe it is only 1 rupee, but you will be always happy with it. करोड़ का भी 1 रुपए का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, because internally you are complete and you know in and out about yourself. You will understand your purpose. आपका रास्ता में जाने के समय में जो आपको चाहिए वो सब ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। So this teaching different concepts, yoga parampara, Lakshmi, Parvati, Saraswati, 3 types of reasons for the illness, that food habits, thinking and relationships, गलत तरीका में जाने से वो बीमारी हम खुद बीमारी को अटैक करते हैं। एंड यंत्र, मंत्र और तंत्र, फिजिकल बॉडी और स्पीच एंड तंत्र बियॉन्ड 3rd day, एंड वाक क्षेत्र का इम्पोर्टेंस। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट उनके पास हर एक समय मिलने के समय एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता था। एंड हमको स्पिरिचुअलिटी मतलब एक भगवद गीता श्लोक हो गया, योग वेमन का शतक हो गया, ऑलवेज वी हैव टू गो थ्रू सम वेरी टफ पोएम्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इन सोल टर्म्स। जो वो बोल रही है इसमें कोई सोल नहीं है, सोल का वर्ड बहुत कम बोलता है। वो बोलता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, बट लेकिन डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए इजी कॉन्सेप्ट्स बनते थे, और those concepts are very easy to remember, and in daily life we can implement it also. So that really made me very interesting and thought-provoking to move with him. And of course the way the seriously मतलब ये हमेशा बोलता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत सारा दुनिया को बदलाव लेकर आना है। इसके लिए जो कुछ मैं बोल रही हूँ तुरंत लोग करने का है। If you don't want to do it, don't come to me, go away from me. If you want to be with me, implement as it is, turant. Don't waste time also. So the timing, the way he, how seriously he is doing, so that really made me to go with him, follow with him. Yeah, thank you. By that time उन्होंने 18 प्रिंसिपल पूरा कंपाइल हो चुका था कि he was on the way, means of 18 प्रिंसिपल? Yeah, by that time
it is completed. But ज़्यादा से ज़्यादा उनका teaching ये 3 do's and 3 don'ts के लिए ही ज़्यादा होता था, because people who are meeting him, they are all completely in a very primitive stage. Internally, definitely law of attraction का ओर से सोचने से people are very spiritual internally, but externally like they land like with non-vegetarian diet. So initial teachings were about 3 do's and 3 don'ts, but he developed those 18 principles, and not only developing like a bylaws in a society, but the implementation, full moon meditation, और pyramids का निर्माण, और सबको भी मास्टर्स बन के सबको भी चांस देने का टीचिंग करने के लिए, एंड वो मौन रखने का, इतना बड़ा सोसाइटी बनने के बावजूद वो खुद 1 साल भर वो मौन में रखा था. एंड इट इज वेरी टफ बिकॉज nobody knows whatever the wisdom Patri Ji is teaching. Everybody थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रही है. कोई आध्यात्मिक में वो बड़ा कोई आदमी आया तो उनसे कौन बात करेगा, and who will address the major programs. So this is a very big task for all the masters. But लेकिन पत्री जी जो डिसीजन लिया, उनका डिसीजन के ऊपर एकदम खड़े रहे हैं. वो पूरा 1 साल में करीब only 3 times. Those are the very important meetings, and there only he spoke only for 3 times. But rest of all the time he is working on literature, and मौन खुद वो प्रैक्टिस करके लिखा है. Like that, whatever he said in those 18 principles, everything he used to implement, and he used to make the others also implement those 18 principles. Yeah. तो आप कब लिखना शुरू करें सारे विजडम्स को? लाइक सर आपने कहा पार्वती मीन्स आवर्स एंड आवर्स, बिगिनर्स को पहले आवर्स एंड आवर्स मेडिटेशन, और उसके बाद जब वो सब कुछ एकदम हैप्पी है, देन दे कैन स्टार्ट एडिंग सम म्यूजिक in their life and also start book reading and like that. तो आपने अपना राइटिंग का कब से आपको लगा कि, एंड उन्होंने क्या कहा आपको कि you start your own separately, like that something it happened? Yeah, actually, as you said about the experiments, one of the most important experiment I can remember is no food experiment. So when we met Patri sir in those series of meetings, once he said, there is no need to take food, physical body फूड से नहीं जी रही है, वो कॉस्मिक ऊर्जा से वो लाइव रहता है. So your doctors just stop eating food for 1 month, and एक किताब लेके इसमें वो लिख के दिया था, no need of food for the physical body, cosmic energy से soul आगे बढ़ेंगे, and nothing is impossible, everything is possible. Do meditation and take cosmic energy and live happily. And लिंडा गुडमैन, ऐसा बहुत सारा मास्टर्स का वो रेफरेंस भी दिए थे. And from today onwards, you just do meditation, don't eat food. And we just went to Vijayawada, and then we started doing it. Immediately, the moment he said, on the spot, we are 5 doctors, we took a decision, and we started not eating anything. First day, second day, third day, we are just drinking water and doing meditation 4 hours in a day, morning 2 hours and late night 2 hours. And sleep इतना कम हुआ कि we used to sleep only 4 hours. And बाकी टाइम रेगुलर प्रैक्टिस. अच्छा, डे टाइम अपना पूरा वर्क जो चल रहा है, पूरा वर्क चल रही है. हॉस्पिटल जाना है और
रेगुलर हॉस्पिटल का जो पोस्टिंग्स है, मेडिकल पोस्टिंग्स मेरे को जैसे वो Who सब were those 4-5 doctors आपके साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? या इसमें 2 ड्रॉप हो गए थे, बट 3 पीपल वी कंटिन्यूड एंड ये बदल में मेरे को करीब 9 केजेस लॉस हुआ था मैं, बट आई एम हैप्पीली कंटिन्यूइंग and around 13th 14th day onwards we used to take one bone from a small orange. If you take orange, if you take half and then another half, so इसमें से एक bone को लेना मतलब it is equal to one big 1 rupee coin weight, means hardly it is 10 grams or 12 grams. Morning one और night को वो पूरा ग्लूकोज बिस्किट पैकेट में हाफ बिस्किट जस्ट टू एंजॉय द टेस्ट. हम लोग है तो हॉस्टल में बकेट बकेट फूड खाता था उस समय में, बिकॉज इन अनलिमिटेड फूड वी गेट. इंस्टेड ऑफ दैट टू फ्रॉम 13th 14th डे ऑनवर्ड्स ओनली दैट वन बोल, एंड कभी कभी लेते थे, कभी कभी नहीं लेते थे, एंड फुल वाटर. एंड वही समय में आंध्रा में एक साइक्लोन आया था. वो साइक्लोन में पैरामेडिकल स्टाफ जैसे हमारा मेडिकल्स को पोस्टिंग किया था. सो जो स्टाफ थे और पैरामेडिकल स्टाफ वो लोग हमको पूछते थे, सर अभी खाना का टाइम है, जाएंगे. हम लोग बोल रहे कि कुछ मेडिटेशन करके हम लोग आएंगे, आप जाइए, बाद में आएंगे. एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन वो लोग बोल रहे कि सर आप लोग कुछ कर रही हैं, हम लोग के साथ आप खाता नहीं है, व्हाट यू आर डूइंग. वो देखने में आप बहुत पतली है, वी आर डाउटिंग, आज कहीं ना कहीं तुम आके हमारा साथ बैठ के खाना खाना है, and we are not believing that you're आप लोग खा नहीं रहे. And third day evening we are about to disperse, and then we said we are not eating anything, we do only meditation. वो लोग सोचे कि ये लोग पागल है, बिना खा के कैसे रहेंगे जीवन में. And you don't believe, after 30 days, and we are so lucky, the last 3 days we were in trekking with Patri sir in Tirupati Balaji forest. And in that forest, Patri sir asked us to share our experience, how we felt. By that time, almost I am in skin and bones. ये पूरा एक कपाल बाहर निकल गया. I am so thin and but very energetic. The whole trekking without food we completed because lot of green energy and Patriji का बांसुरी म्यूजिक के साथ group meditation sessions and lot of happiness, and sleep decreased to 4 hours. कई टाइम नींद में जाने से within 3.5 4 hours we used to wake up. After that वो नींद ही नहीं आएगा. So that no food experiment really changed my thought towards food. इसके बाद कोई फूड लेना मतलब that food itself is a meditation for me and it's an experiment. एक जगह पहुंचने के बाद हमको लगता है कि this is enough. The taste is satisfied. Food is only for the taste, not for the stomach feeling or for to live in life. For me, food is only for taste. वही पत्री सर बोलते थे, and he used to implement the same. So these experiments really, so many experiments like that. So that really gave me a much happiness and the practical way of living. Yeah. So आपका पूरा एक खुद का ऑटोबायोग्राफी पे सर हिंदी में कोई बुक है सर आपने लिखा, ये सारी चीजें हैं जर्नी का? Yeah. So सर बोलने के बाद उनको देख देख के slowly I developed my spiritual tablet wisdom. गोली को गोली मारना है, that is the only caption he gave. वो गोली कैसे मारना है, उनके लिए तो एक पिस्टल चाहिए हमको. वो पिस्टल के अंदर जो मैकेनिज्म है, that is what spiritual tablets. And so those spiritual tablets I started writing. Pocket books वो तेलुगु में करीब अभी तक
30 books I published, and medium books, the 12 spiritual tablets, soul scanning, tropic signals of the soul, and 7 spiritual tablets. ऐसा जो बड़ा किताब भी मैं लिया था, लिख चुका हूँ. And these books I used to give to my patient gods. Once they read different basic books prescribed by Patri Ji, और ये ध्यान करने के बाद, शाकाहारी बनने के बाद जो अनुभव उनको आएगा, वो अनुभव के हिसाब से स्पिरिचुअल टैबलेट ये विज्ञान जैसे उनको देता था. And I gave all my experiences in interviews. So ऑडियोस बन चुका हूँ, मेरा पूरा जर्नी विथ पत्री सर and how I went into the spiritual tablets wisdom. So that I made around 18 audios I published. At that time, the audios are so famous, easy to reach people, because people वो आदत बहुत कम थे किताब पढ़ने हिंदी का. में भी है सर? हिंदी में इंटरव्यूज हैं, जोरबा भी मेरे से इंटरव्यू बहुत बार लिया था. एंड थैंक्स फॉर किया था पीएमसी हिंदी में. पीएमसी हिंदी में भी है, एंड इंग्लिश में भी बहुत है थ्रू ग्लोबल पीएमसी इंग्लिश. ऑल्सो आई गिव माय प्रेजेंटेशंस अबाउट माय हिस्ट्री एंड बहुत सारा विजडम जो पत्री से सीखा था, आई गिव इट. या सर, जब आपको ये सर का प्लान के बारे में पता था सर कि सर इज गोइंग टू वैकेट, बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड टू से 2095. so what is your understanding, and when you understood that he is going to vacate for this year? Yeah, definitely it is a very big turmoil for me too, because he is like a godfather to everyone, and it is the final confirmation in anything. बहुत सारा चीज मैं खुद डिसाइड करके कर लेता हूँ, but whenever it comes to junctional points, major junctions, definitely we try to get his own view and most of the confirmations from Patriji. And recently, as I'm living in UK, currently I'm pursuing my second master's in financial technology. First, I went to UK as a pilot trip, and I conducted a lot of sessions across UK. Then, based on my internal message and Patri sir का permission लेने के बाद, I went to Europe, and in UK I did my public health masters. And after that, after COVID, again I went and I am pursuing my financial technology degree to get some administrative wisdom and especially to gain wisdom about finances, because at the end of the day, every organization move with finance. So because it is a tough degree, it is not from my actual background, medical background, a bit tough to digest. So I was so keen about my education part. And these 4 months, especially after January and after meeting him in April, सर को देखने के बाद मन में मेरे को ऐसा लगता कि ये सब छोड़ के उनके पास जाऊं. At least 1 month or 2 months, I want to be with him. And whatever the best I can do, it is not the healing part I can say, because he is the one who made me a spiritual doctor. I cannot teach him. It is not like that. But उनको सेवा करें, मेरा मन में था. And I am so tied up in implementing his wisdom in UK. There a lot of people, there is zero teaching simply. A lot of people to, supposed to transform. Every day I have to attend some sessions in
Western countries, and parallelly, the education also so tough. I cannot simply come out of that mesh. I can say I tied up like anything there. And वो समय में सर के बारे में सुन के what is his idea? Why he is running through that tough phase? Then I started digging, started working on that. I used to talk to other masters, and I sit in meditation so many times. And then after observing so many things, I realized it looks like he took a decision. And the majority of the times, with so many observations, I realized no doubt he gave guidance until 2095, because एक लैंडमार्क दिया था वो, until 2095 we need to work on this earth to make this a pyramid जगत, शाकाहार जगत, ध्यान जगत, आत्मज्ञान जगत बनने के लिए उतने टाइम तक हम सब लोग काम करने के हैं। वो मार्क है तो सेट किया था। वो समय तक जरूर वो हमको हमारा पीछे रह के वो हमको गाइडेंस देगा। Apart from this, somehow I sensed and I confirmed myself in my own way that he is going to come as a walk-in again within a year. When you got this, sir, I too have experience of this. I can say 1.5 months ago. Oh. From that point, I realized, I understood that he is going to come as a walk-in again. And I understood, अभी जो मूवमेंट चल रही है, ये ईस्ट से वेस्ट में जा रही है। Somehow I felt that he is going to start his movement again from west to east. We are seeing from one side of the coin now on the whole earth. So now he will start his movement from the other side. Ultimately, we need guidance. उनका मार्गदर्शन हमको चाहिए। वो कैसे करेंगे ये फिजिकल बॉडी से? मेरे ख्याल से, in my own understanding, after moving with him, for him the physical body is just like a मूंगफली हम लोग खाने के बाद उनको जो कवरिंग्स है हम लोग ऐसे फेंक देते हैं। इससे बिना कोई एग्जाम्पल नहीं रहेगा। फॉर एवरी योगी द फिजिकल बॉडी इज जस्ट लाइक ए व्हीकल। वैसे हम लोग कार में मोटरसाइकिल में घूमने के बाद उधर पार्क करके फिर घर में चले जाते हैं हम लोग। कभी बाहर गए तो 15 दिन उनको देखेंगे नहीं। सो फॉर हिम जस्ट लाइक ए मूंगफली का जो कवरिंग रहता है ऐसी है उनको फिजिकल बॉडी। सो वेयर एंड टेयर इज देयर। इफ यू वांट यू कैन सेटरेट इट, बट इसके लिए बहुत ऊर्जा रखना पड़ेगी। So he took a decision. He left this and to come back again with a double force in a young body and to continue his work from west to east, so that both will be balanced and the whole earth we can establish that pyramid jagat, sakar jagat, jo itna sara goals hai. Then I become light. Okay. So he will be there anyway, and he will guide us in whatever the way he is doing with a double force. And really, wherever he is required, there he will start his work again. And easily we can recognize whatever the body he took, we can recognize easily. So being a medical doctor, it is a bit tough for me to digest, but it came in multiple ways. My way of confirmation is not simply like a single experience. I pursue some dreams. I observe a lot of coincidences. I go through literature and I go through his words, the way how he is giving his vision about world. So multiple areas I observe, and one day all these flowers will
become like a garland, and I'll wear that garland. So that garland itself is a confirmation from me. That is how usually I go. And in the same way, I understood, and then मेरे को पहले आराम मिलना है कि उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, and he is making his own way, you know, to guide us in a double energy force. So that really gave me a good conclusion, and thank you very much for giving this great opportunity, because One last question, sir. पत्री सर के बारे में बोलना मतलब वो पूरा जीवन भर उनके बारे में बोल सकते हैं. Yes. So one last question. So, what was his last when you last met with him? उन्होंने उस समय आपको कुछ indications कुछ बोला था आपके लिए कोई message? Yeah, really, it is very happiest moment for me, because in April में जब मैं पत्री सर को मिली थी, वो समय में I heard that he is not coming out of the room, maybe 13 days or 14 days, something like that. But by the time I went, he is in the canteen, cafeteria. He is eating noodles, actually, Chow which is my favorite food, in fact. And immediately he called me, and he shared the noodles, and I enjoyed the noodles food in the cafeteria, and I updated all whatever I am doing. He nodded his head, and he didn't told anything, and he gave his green signal for most of the upcoming works, whatever I am doing. In fact, I can say, मौन के बाद, this is the first time I didn't get any verbal indication from him about the works I am doing, the visions I have, and the major programs. अभी ये आनंद ब्रह्म प्रोग्राम अभी हम लोग अगस्त में कर रही है, and I told him the place where Srikakulam is selected, and we are going in this way. So everything he nodded, and he said, yes, go. And really that meeting gave me much happiness. There itself I dispersed. Next day, of course, I am with him, and he introduced me in the fall 40 दिन का जो meditation है, इसमें मेरा अनुभव भी मैं पूरा सबको भी बोला था, and he gave his own way of introduction about me. And that one day spending with Patriji is really very fabulous for him. For me. Yeah, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thanks for this much time and helping us to, yes, we all are means trying to come out of that situation. Sometimes we are in grief, sometimes we are feeling who is not there. So because this year Amarkantak program we are again going to organize in the month of October. So last year only he declared every year you have to, Team Zorba have to conduct this Sharad Purnima during Sharad Purnima. So this year again big celebration, big arrangement. So I was thinking, sir, you are not there, then how we are going to do, how we are, means who is going to come like that. Then immediately by night, so many people, they started telling, we are going to organize, we are going to come like that. So this is what means when we, from last 1 year, I was able to communicate with him non-verbal way, means in the form of like meditation or like that. So I used to think, sir is not talking to me, sir is not calling me. So from last 1 year, he made us, but the things what I'm learning from all of you, तो हमें बहुत confidence दे रहा है, sir. Thank you so much for sparing this much time for Team Zorba.